अस्सलाम-ओ-अलैकुम, वेलकम टू हाईटेक शॉप। आज हम HP NV15 X360 Convertible Ryzen 5 2500U प्लस AMD Radeon Vega M ग्राफिक्स का फुल रिव्यू करेंगे और इस लैपटॉप पर हम आपको GTA 5 टेस्ट करके दिखाएंगे। HP NV15 X360 का डिज़ाइन देखें तो काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है, यूनिक स्टाइल, अल्ट्रा स्लिम मेटल बॉडी, न्यू HP लोगो, 15.6 इंच मेटल बॉडी और टच स्क्रीन होने की वजह से इसका वेट तकरीबन 2 kg है। ये लैपटॉप आता है फुल साइज आइलैंड स्टाइल बैकलाइट कीबोर्ड विद न्यूमेरिक कीपैड। The premium design, gorgeous display and tablet capabilities combined for a computing package that seems ideal for students on their return to school considering what this 2-in-1 offers. इस लैपटॉप की साइज़ की बात करें तो ये 15.6 इंच में आता है। इसकी बॉडी जो है ये मेटल की है, एल्युमिनियम की है। लोगो अगर इस लैपटॉप का देखें तो ये HP न्यू लोगो है। वेट अगर इस लैपटॉप का देखें तो ये 2 kg है। रोटेशन अगर इस लैपटॉप का देखें तो ये X360 है। ये आप देख सकते हैं टैबलेट मोड। You can use it on table like this in your office. काफ़ी easy है। With one touch you can write anything. जब आप टैबलेट मोड पर करेंगे तो स्क्रीन पर कीबोर्ड आ जाएगा जो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी टच काफ़ी स्मूथली टच है। ये अगर आप देखें तो विद वन फिंगर यू कैन स्क्रॉल डाउन वेरी इजीली। इस लैपटॉप का डिस्प्ले देखें तो 15.6 इंच FHD IPS माइक्रो एज WLED बैकलाइट मल्टी टच एनेबल एज टू एज ग्लास। इस लैपटॉप की पोर्ट्स देखें तो फर्स्ट वन HP ब्लू पिन 65 वाट चार्जिंग पोर्ट, USB 3.1 Gen 1 पोर्ट, पावर बटन, वेंट पैनल, यूनिवर्सल ऑडियो जैक की पोर्ट है, SD कार्ड रीडर। राइट साइड पर इस लैपटॉप का आप देखेंगे तो राइट साइड पर फर्स्ट वन जो है ये HDMI V 2.0, USB 3.1 Gen 1, Type C 3.1 Gen 1, वॉल्यूम प्लस माइनस बटन, full size island style backlight keyboard with numeric keypad, Bang & Olufsen HP audio boost dual speakers, micro edge display, HP wide vision FHD IR camera with digital microphone, HP blue pin 65 watt charger। ये मैंने पावर बटन प्रेस कर दिया। HP NV15 X360 का बूट टाइम टेस्ट करते हैं। इस लैपटॉप में Windows 10 इंस्टॉल्ड है। इस लैपटॉप ने टाइम लिया है तकरीबन 13 to 15 सेकेंड्स। NV15 में प्रोसेसर देखें तो Ryzen 5 2500U with Radeon Vega graphics, 4 core CPU, 8 logical प्रोसेसर, 4 MB कैश स्पीड। इस लैपटॉप की बेस स्पीड 2.0 GHz, टर्बो अप टू 3.6 GHz। मेमोरी अगर इस लैपटॉप में देखें तो 8 GB की रैम लगी हुई है, 2400 MHz की सिंगल रैम लगी हुई है। अगर आप चाहें तो 1660 लगाकर अप टू 32 GB तक भी रैम अपग्रेड कर सकते हैं। SSD इस लैपटॉप में देखें तो हाईनेक की 256 GB NVMe की SSD लगी हुई है। वाईफाई देखें तो Realtek RTL8822BE 802.11 AC PCI एडाप्टर लगा हुआ है। ग्राफिक अगर इस लैपटॉप में देखें तो AMD Radeon Vega 8 1GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है इस लैपटॉप में। डिस्प्ले अगर इस लैपटॉप का देखें तो 15.6 इंच FHD IPS माइक्रो एज WLED बैकलाइट मल्टी टच एनेबल एज टू एज ग्लास विद 1080p रिजोल्यूशन।
HP NV X360 Convertible 15 Ryzen 5 का बैटरी रिपोर्ट मैंने बनाया है। ये अगर आप देखें तो डिज़ाइन कैपेसिटी 48,164 mWh है। फुल चार्ज कैपेसिटी 48,165 mWh है। बैटरी की टाइमिंग राउंड अबाउट 4 to 5 आवर्स है। HP NV X360 15 Ryzen 5 2500U पर मैं आपको GTA 5 टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसकी सेटिंग देखें तो रिजोल्यूशन 1080 पर है। बाकी सारी चीज़ें ज़्यादातर ऑफ हैं। नॉर्मल ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल पर की हुई है मैंने। FPS अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो तकरीबन राउंड अबाउट 25। That's dumb luck right there. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. What we waiting for? Magellan Ave, nigga. Vespucci Beach. And you still rolling with that old raggedy ass hair? That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bite that S.A. Vargo's dude with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. Yeah, okay, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look. We go in quiet, in and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brash, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. The bike should be in one of the lockups down here. Should be as the story of your life, asshole. Think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You all right? No, wait, away from me! Work for sample agent! Hold, homie. Shit. Shit, man. Play it cool. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit.
it's smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. It's in one of these lockups. Man, ain't this blasting football? Just start up, homie. Find your bitch ass some cover. Hold up, blast. Shit. Grab the point your left. Hey, man, down. Now look what you done gone and done, homie. I want to get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. What you on, homie? Raise up now. Motherfuckers getting away from us. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh, shit, Professor, you're right. What the fuck is that? Yeah, damn. This punk get away, we going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Don't play the blame game. Just get on this shit. We need to shoot him off the bike. A couple of scratches better than nothing. Get that bike back. Homie, you tripping. Man, what's wrong with you? I'll drive next time. Get out of the way. Don't get careless, homie. Man, I'm sorry, fool. Hey, watch her. We want your bike, bitch. Shoot it down. And watch that shit, homie. We got it. Take the bike and meet me at the car wash around the way. All right, drive safe. What the fuck? Dark bag. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally... NV15 X360 कन्वर्टेबल का बैक कवर मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं कि इसमें आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है।
नीचे भी रबर है, ऊपर भी रबर है, रबर के नीचे स्क्रू है। ये ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोसेसर चिप है, प्रोसेसर फैन। इसमें रैम देखें तो यहाँ 8 GB की सिंगल रैम लगी हुई है, एक नीचे एम्प्टी स्लॉट है, इसमें 2 रैम लगते हैं। ये NVMe की SSD है। इस पर कवर लगा हुआ है, अगर कवर आप हटा देंगे तो आप SSD और रैम को इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। ये HDD की एम्प्टी प्लेस है। ये वाईफाई चिप, 48,000 mAh की बैटरी, ऊपर ड्यूल स्पीकर्स,